Okay, Assalamu alaikum students. Let's get started with October November 2025. Paper 2, Variant 2, 1 hour 45 minutes का paper. This is O level physics. So let's get started with it. अच्छा जी, क्या लिखा हुआ है initially? Let's read this out. हम्म तो यहाँ पे we have written a car travel along a straight horizontal road initially at a constant speed. The speed time graph in figure 1.1 shows the motion of the car at time t is equal to 0. अच्छा जी, ये speed time graph है. Beta, whenever you see a speed time graph, there are two key points that you need to remember. Area under the speed time graph is equal to what? Distance. And the second key point क्या है भाई? Gradient of the speed time graph is equal to acceleration. Simple. At time t is equals to 5.7 seconds, the driver sees an obstruction in the road. अच्छा जी 5.7 seconds पे आप obstruction देख रहे हो. Sir, where will be 5.7 seconds? This is 4, this is 6. You are going from 4 to 6. आप 2 seconds का time cover कर रहे हो. You are covering 2 units and how many boxes? 10 boxes बेटा. एक बॉक्स कितने seconds के equal होगा? 0.2 seconds. Where is 5.7 seconds lying? ये 5 हो गया. 5.2, 5.4, 5.6. In the middle here we have 5.7. Okay. आगे बढ़ते हैं. The driver applies the brake a short time later and the car begins to slow down. Use figure 1.1 to determine the speed of the car at time t is equal to 0. भाई आपने speed of the car determine करनी है at time t is equal to 0. This is the speed of the car at time t is equal to 0. Now can you humbly realize that जब आप 20 से 30 पे जा रहे हो बेटा, you are covering 10 units in how many boxes? 10 boxes. एक बॉक्स कितने यूनिट्स के इक्वल होगा? 1 यूनिट. This is equals to what? 29. The speed at time t is equals to 0 is 29 meters per second. Now you have to calculate the distance traveled by the car between the driver seeing the obstruction at time t is equals to 5.7 seconds and the car beginning to slow down. बेटा कार slow down कब कर रही है? The car is slowing down at this point. यहाँ पे. At this point the car is starting to slowing down. This is 6.4 seconds. आपने ब्रेक्स कब लगाए थे बेटा? 5.7 seconds पे. You are starting to slow down at 6.4 seconds. Okay. You have to calculate the distance traveled by the car between seeing the obstruction at time t is equals to 5.7 seconds and the car begins to slow down at t is equals to 6.4 seconds. What will be the distance traveled? Distance is equals to speed into time. Speed क्या है बच्चा? 29. Time क्या हो जाएगी? 6.4 minus 5.7. What does your distance comes out to be? Distance निकालो जरा क्या आता है? What does your distance comes out to be? 29 into 6.4 minus 5.7. This comes out to be 20.3 meters is your distance traveled. Simple. आगे बढ़ते हैं बेटा. Now let's see this. Calculate the distance traveled by the car between time t is equals to 0 and 11.2 seconds. 11.2 seconds कहाँ है? This is 11. This is 11.2. Okay. So basically you have to calculate the distance traveled between time t is equals to 0 and 11.2 seconds. बेटा distance किसके equal होता है? The distance is equals to the area under the graph. बेटा the area under the speed time graph is equals to your distance. You have to calculate the area of this trapezium. How will you do that? Area of trapezium किसके equal होता है बेटा? 1/2 into sum of parallel sides multiplied by what? Multiplied by height. 1/2. What are the parallel sides? बच्चे parallel sides कौन सी है? एक तो ये हो गई. This is what? 6.4. Okay. What is another parallel side? This one. This is what? 11.2. Multiplied by the height, that is 29. What is the distance traveled? हाँ जी, distance traveled क्या हो जाएगा भाई? Multiplied by 29 divided by 2. Distance traveled is equals to 255.2
meters. Let's bring this entire working on the downside. इस पूरी working को नीचे ले आते हैं. Let's bring it here. The distance traveled by the car in 11.2 seconds is equals to this. ठीक है. अब आगे बढ़ते बेटा. The speed of the car affects both the thinking distance and the braking distance. भाई speed of the car thinking distance को भी affect करी है, braking distance को भी affect करी है. State one factor that affects only the braking distance of the car. Explain how a change in this factor increases the braking distance. बेटा कौन सा फैक्टर सिर्फ और सिर्फ ब्रेकिंग डिस्टेंस को इंक्रीज करेगा? द कंडीशन ऑफ द रोड. यू कैन से कंडीशन ऑफ द रोड. Condition of the road only affects the braking distance. What will be the explanation? If the road is wet, it causes the friction between tires and road to decrease. As friction decreases, the car takes a longer time to decelerate and come to rest. And come to rest. Simple. आगे बढ़ते बेटा. Let's move ahead. Let's zoom in. A spherical container is used to carry measuring instruments to the bottom of a lake. Okay जी. ये spherical container है जो measuring instruments को bottom of the lake पे ले जाता है. Okay. Figure 2.1 shows the container held at rest just below the water surface of a lake. ठीक है भाई ये container है held at rest just below the water surface. The container is released and falls through the water to the bottom of the lake. Okay. कंटेनर को आपने रिलीज किया है. जब भी आप कोई भी चीज रिलीज कर, वेन एवर यू रिलीज समथिंग, it has an initial velocity of 0, falls through the water to the bottom of the lake. Okay. The container reaches terminal velocity before it hits the bottom of the lake. अच्छा जी कंटेनर टर्मिनल वेलोसिटी को रीच कर रहा है. Explain in terms of forces. You have to explain in terms of forces the motion of the container through the water until it reaches terminal velocity. आपने motion of the container को explain करना है until it reaches terminal velocity. How will you do that? You have to do your explanation in terms of forces. First of all क्या कहोगे? First of all क्या कहोगे? Initially, you will say initially या at start कह लो. Initially कह लो. You will say initially or at a start, only the weight acts on the object, causing the acceleration of the container to be 9.8 meters per second square. Beta, initially at the start, only the weight acts on the object, causing the acceleration of the container to be 9.8 meters per second square. Yeah, the acceleration is equals to the acceleration due to gravity. Okay. फिर आप क्या कहोगे? As the container falls down, it gains speed and the resistive force and the resistive force on the
container increases, causing the resultant force to decrease. Causing the resultant force to decrease. What will be your last key point, beta? When the downward force of weight equals the upward resistive force. Upward resistive force. The container reaches terminal velocity. Simple as that, nothing complicated here. आगे बढ़ते हैं. Let's further move ahead. The container falls through a vertical distance of 32 meters, okay, before it hits the bottom of the lake. The container and the instruments have a total mass of this. ये आपका total mass आ गया. Calculate the energy transferred from the gravitational potential energy stored of the container. हमने change in gravitational potential energy निकालनी. How will we do that? mg change in height. मास क्या है बेटा 74. ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है 9.8 मल्टीप्लाइड बाय द हाइट दैट इज 32. Can you calculate change in gravitational potential energy? That comes out to be 2.3 10 is to the power of 4 joules. Simple as that, nothing complicated here. State the principle of conservation of energy. Principle of conservation of energy क्या कहता है? The total energy of a system remains constant or conserved. This means energy can neither be created nor destroyed. तो यहाँ पे लिख लो. You can say the total energy of a system remains conserved. The energy cannot be created or destroyed. It transforms. या ये कह सकते हो energy can neither be created nor destroyed. You can say it transforms. Yeah, it transfers from one form into another. एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाती है. इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. सिंपल. लेट्स फर्दर मूव अहेड. Work is done to transfer energy from the gravitational potential energy store as the container reaches its terminal velocity. बेटा terminal velocity का मतलब क्या होता है? Constant velocity. If your velocity is constant, that means change in kinetic energy will be zero. Okay. Work is done to transfer energy from gravitational potential energy store as the container falls. ठीक है बेटा. जैसे जैसे आपका कंटेनर फॉल कर रहा है योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग बट योर काइनेटिक एनर्जी इज रिमेनिंग कांस्टेंट. इट इज जीरो. ओके. Describe in terms of work done how the energy is transferred from gravitational potential energy store to one other energy store in the water. भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस चीज में ट्रांसफर हो रही है? यू विल से gravitational potential energy is converted into the internal energy of the container as work is being done against friction. Sir, what do you mean by that? देखो बेटा, जो gravitational potential energy का decrease आ रहा है, this is getting converted into what? Work done against friction. Whenever work done against friction happens, this causes your object, yeah, the container to heat up. Hence, your internal energy of the container increases. So you will say, work is done, yeah, energy is transferred. Energy is transferred by doing work against friction. What will be your last point?
This causes the internal energy, internal energy of the container to increase, of the container to increase. Simple as that, nothing complicated. आगे बढ़ते हैं बेटा. अच्छा जी, what is this? Figure 3.1 shows a firefighter directing a jet of water at a wall. अच्छा जी, jet of water हम direct कर रहे हैं at a wall. In 1 second, the volume of water is 7.510 raised to the power of minus 3. इतना volume of water है. That hits the wall horizontally at a speed of 24. ठीक है, ये speed आ गई water की. The density of water is this. Perfect. You have to show that the mass of water in 1 second is dash. अच्छा जी, mass निकालने. mass का formula क्या होता है बेटा? Mass is equals to density into volume. Density क्या है? 1000. Volume क्या है? 7.5 10 raised to the power of minus 3. Mass क्या आ जाएगा बेटा? What will your mass come out to be? 7.5 kg. Simple as that. अच्छा जी. The horizontal momentum of the water that hits the wall in 1 second. अच्छा जी, momentum निकालना. Momentum is equals to mass into velocity. Mass क्या है बेटा? 7.5. Velocity क्या है भाई? Velocity is 24. Multiply करो. What does your momentum comes out to be? बच्चे momentum किसके equal आ जाता है? Momentum comes out to be 180 kg meters per second. Simple. The horizontal momentum of water decreases to zero when the water hits the wall. None of the water bounces back from the wall. Okay. Beta, horizontal momentum decreases to zero when the water hits the wall. None of the water bounces back. Explain why the momentum calculated in A part 2 is equal in size to the horizontal force exerted on the wall by the water. Examiner कह रहा है कि the force that the water will exert on the wall, let's say this, will be equal to what? Will be equal to the change in momentum. You have to explain why. बेटा हमें फोर्स का फॉर्मूला याद है. फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम ओवर चेंज इन टाइम. चेंज इन टाइम इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड. चेंज इन मोमेंटम आप निकाल चुके हो, दैट इज 180. Hence the force will be equal to the change in momentum. Simple. First of all आप लिखोगे, first of all you will say the force is equals to the change in momentum divided by the time taken. बेटा ये फॉर्मूला लिखने का 1 मार्क्स था. Force is equals to change in momentum divided by the time taken. Then what will you say? Then what will you say? Since the time taken for the change in momentum is 1 second, force equals the change in momentum. यहाँ पे आप लिख दो, since time equals 1 second, the force is equal to change in momentum. Simple, easy peasy, lemon squeezy, nothing complicated here. आगे बढ़ते बेटा. अच्छा, explain in terms of Newton's third law why there is a horizontal force exerted on the wall by the water. बेटा हमने बताना है according to Newton's third law why there is a horizontal force exerted on the wall by the water. ये wall पे क्यों force लग रही है? You will say that there is a force by the wall ऑन द वाटर. बेटा ये आपकी जो वॉल है वो वाटर पे एक फोर्स लगा रही है. अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ वाटर भी वॉल पे एक फोर्स लगाएगा. ठीक है, तो व्हाट विल यू से? व्हाट विल यू से? यू विल से द वॉल exerts a force on the water. फिर आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ.
अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ फिर आप क्या लिखोगे? यस, व्हेन ऑब्जेक्ट ए, यू कैन से व्हेन ऑब्जेक्ट ए, व्हेन object A applies a force on object B, yeah, when object A exerts a force on object B, what will happen? What will happen? Object B exerts an equal and opposite force on object A. Object B exerts an equal and opposite force on object A. बेटा न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे फोर्स लगा रहा है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी फर्स्ट वाले पे फोर्स लगाएगा ऑफ एन इक्वल मैग्नीट्यूड एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो पहले आपने बता दिया द वॉल exerts अ फोर्स ऑन द वाटर अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ व्हेन ऑब्जेक्ट ए exerts अ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी exerts एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ए। हेंस लास्ट पॉइंट क्या लिखोगे? हेंस the water applies a horizontal force on the wall. Simple as that. आगे बढ़ते हैं। The pump that forces the water to flow through the hose is adjusted and the speed of the water leaving the hose doubles। अच्छा जी, स्पीड आपकी डबल हो रही है। Explain why the force exerted by the water on the wall increases by a factor of 4। बेटा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। यू आर डबलिंग द वेलोसिटी, आपकी वेलोसिटी डबल हो रही है। द वेलोसिटी एट विच द वाटर इज लीविंग डबल्स, तो बेटा द मास ऑफ वाटर विल ऑल्सो डबल। बेटा अगर आपका पानी डबल स्पीड से फ्लो कर रहा है तो जितना मास ऑफ वाटर रिलीज होगा दैट विल ऑल्सो बी ट्वाइस। स्पीड ऑफ वाटर ट्वाइस है, मास ऑफ वाटर ट्वाइस है, हेंस द रिजल्टिंग फोर्स विल बी 4 टाइम्स। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? यू विल से द वेलोसिटी या द स्पीड ऑफ द वाटर एंड द mass of water doubles, causing the momentum to increase by a factor of 4 and force increases by a factor of 4। Simple, easy। आगे बढ़ते हैं। Okay, let's see this. At a large test tube contains a thermometer and some solid wax at a temperature of 21 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा जी, आपका इनिशियल टेम्परेचर है 21 डिग्री सेंटीग्रेड का, ठीक है। At time t is equals to 0, the test tube is partially immersed in a beaker of boiling water and the temperature of wax is recorded for the next 600 seconds। अच्छा जी, टेम्परेचर ऑफ वैक्स रिकॉर्ड कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 600 seconds, ठीक है। Explain how figure 4.1 shows that the melting temperature of wax is 63 degree centigrade। हमने explain करना है why the melting temperature is 63 degree centigrade। बेटा अगर आप realize करो तो 63 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो रहा है? 63 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेटा क्या हो रहा है? टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा है। Whenever the temperature gets constant, this means melting is occurring। ठीक है, so you will say the temperature
gets constant. The temperature gets constant at 63 degrees centigrade, indicating that melting occurs at 63 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, टेम्परेचर जहाँ पे कांस्टेंट हो रहा है वहाँ पे आपकी मेल्टिंग अकर करी एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड. द टेम्परेचर बिकम्स कांस्टेंट, hence melting is occurring at 63 degrees centigrade. Simple. As the temperature of the wax increases, the energy in the internal energy store increases. The mass of the wax in the test tube is this. This is the mass. The temperature at time t is equal to 0. Is this perfect? The specific heat capacity is this perfect? Use figure 4.1 to determine the increase in energy in the internal energy store of the wax between time t is equal to 0 and time t is equal to 220. भाई 220 पे आपका टेम्परेचर क्या है? लेट्स सी. 220 सेकेंड्स कहाँ पे होंगे? अब लेट्स फाइंड दैट आउट. कैन यू रियलाइज यू आर गोइंग फ्रॉम 200 to 300 सेकेंड्स. आप कितने सेकेंड्स कवर कर रहे हो? 100 सेकेंड्स. इन हाउ मेनी बॉक्सेस? 10 बॉक्सेस. बेटा एक बॉक्स कितने सेकेंड्स के इक्वल होगा? 10 सेकेंड्स. दिस इज 220 सेकेंड्स. 220 सेकेंड्स कितने टेम्परेचर के इक्वल होगा बेटा? दिस. व्हाट इज दिस टेम्परेचर? लेट्स सी. आप 40 से 60 जा रहे हो. यू आर कवरिंग 20 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर इन हाउ मेनी बॉक्सेस? 10 बॉक्सेस. एक बॉक्स कितने टेम्परेचर के इक्वल होगा? 2 डिग्री सेंटीग्रेड. दिस बिकम्स 48. तो आपका फाइनल टेम्परेचर क्या है बेटा? योर फाइनल टेम्परेचर इज 48 डिग्री सेंटीग्रेड. इनिशियल टेम्परेचर क्या है बेटा? 21 डिग्री सेंटीग्रेड. मास क्या है? 0.04 kg. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? 2100 जूल्स पर kg डिग्री सेंटीग्रेड. व्हाट विल योर एनर्जी कम आउट टू बी? क्यू क्या आ जाएगा? क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी. मास क्या है भाई? 0.04. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? 2100. चेंज इन टेम्परेचर क्या है? फाइनल टेम्परेचर क्या है बेटा? 48. इनिशियल टेम्परेचर क्या है? 21. कैन यू कैलकुलेट दिस आंसर? क्या आप ये आंसर निकाल सकते हो? दिस कम्स आउट टू बी व्हाट? दिस कम्स आउट टू बी 2268 joules. दिस इज योर एनर्जी क्यू. सिंपल. ये आपकी एनर्जी आ गई क्यू. सिंपल. अब ये आपने लिखा हुआ है फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स पे. यू हैव रिटन दिस टिल फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स. कन्वर्ट इट आइडर टिल थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स. दैट विल बी 2270. या फिर टू सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कर दो बेटा. दैट विल बी 2300 जूल. सिंपल. एनीथिंग इज पॉसिबल. Describe what happens to the motion of the molecules of the solid wax as the internal energy increases. बेटा इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो क्या हो रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी. एज द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस व्हाट विल हैपन? The molecules will vibrate more vigorously. The molecules will vibrate more vigorously, more faster, with a larger amplitude. तो ये लिख लेते हैं भाई. Let's write it down. You will say as internal energy increases, the temperature increases. Since temperature increases, kinetic energy of molecules increases. Since kinetic energy of molecules increase होगा क्या होगा? As the kinetic energy of the molecules increase क्या होगा? The molecules vibrate faster and with a larger amplitude. Molecules क्या करेंगे? Vibrate करेंगे faster and with a larger amplitude. With a larger amplitude. Simple. With a larger displacement भी कह सकते हो. Simple. When the wax reaches its melting point, energy continues to be transferred thermally to the wax. Okay. Describe in terms of forces between the
particles, why energy is required to melt the wax? बेटा एग्जामिनर कह रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट पे भी हीट एनर्जी ट्रांसफर करनी पड़ रही है, why? Because at the melting point, work is done on the particles. Yeah, work is done to break the intermolecular forces between the particles. आप कह सकते हो at the melting point. You can say at melting point. What will you say? At melting point, what will you say? Work is done to break the intermolecular forces between the particles. You will say at melting point, work is done to overcome. To overcome what? To overcome the forces between the molecules. The forces between molecules, या फिर आप कह सकते हो वर्क इज डन टू ब्रेक द बॉन्ड्स. वर्क इज डन टू break the bonds. Any wording is satisfactory and correct. आगे बढ़ते हैं. The microwave region is one region of the electromagnetic spectrum. भाई माइक्रोवेव रीजन जो है एक रीजन है ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है. फिगर 5.1 represents the electromagnetic spectrum. Okay, divided into seven main regions. अच्छा जी, इसके seven main regions हैं. Okay, the regions are arranged from left to right in order of increasing wavelength. Okay, indicate the microwave region by marking it with M. हमेशा याद रखो microwaves are just to the left of the radio waves. Okay. Indicate the ultraviolet region marking it with letter UV. बेटा ultraviolet क्या होती थी? This is gamma rays. This will be what? X rays. Gamma rays की सबसे smallest wavelength. फिर X rays. फिर ultraviolet आती थी UV. So you will mark UV here. Erase this. Let's see this. The frequency of the microwaves used by some satellite systems is this. अच्छा जी, ये frequency of microwaves आ गई. Okay. The speed of microwaves is this. Okay, speed भी आ गई. You have to calculate the wavelength of the microwaves. How will you do that? V is equals to F lambda. Velocity क्या है बेटा? 3 into 10 raised to the power of 8. Frequency क्या है? 12 into 10 raised to the power of 9. Wavelength हमने निकालनी है. How will you calculate the wavelength? 3 into 10 raised to the power of 8 divided by 12 into 10 raised to the power of 9 is equals to your wavelength. Describe how microwaves are used in satellite television systems. भाई microwaves किस तरह use होती हैं in satellite television systems? What will you say? Microwaves are sent to the satellite. ठीक है. Microwaves या encoded microwave signals are sent from the earth to the satellite. यहाँ पे लिख लो. फर्स्ट की पॉइंट क्या लिखोगे? Encoded microwaves signals are sent from earth to satellite. फिर क्या होता है? What happens? सैटेलाइट से फिर ये सिग्नल्स वापस ट्रांसमिट होते हैं टू द अर्थ. यू विल से देन द सैटेलाइट transmit these transmits these signals back to earth. Simple. आगे बढ़ते हैं बेटा. लेट्स मूव अहेड. अच्छा जी, आगे क्या लिखा हुआ है? ऑल माइक्रोवेव्स, ठीक है. All microwave ovens, okay. All microwave oven have a switch that turns the oven off when the door is open. अच्छा जी, जब आप डोर ओपन करते हो तो माइक्रोवेव ओवन स्विच ऑफ हो जाता है. एक्सप्लेन why it is important for the microwave oven to switch off when the door is open. जब डोर ओपन होता है तो माइक्रोवेव ओवन क्यों स्विच ऑफ हो जाए भाई? To prevent the microwaves from escaping. Because if the microwaves escape from the oven, they can cause burns. तो यहाँ पे लिख दो. As the microwave oven switches off
It prevents the microwaves from escaping and causing burns. From escaping and causing burns. Simple as that, nothing complicated. आगे बढ़ते हैं. Let's further move ahead. An electric car is driven by a direct current motor that is powered by a direct current power supply. Describe how a direct current differs from an alternating current. हमने बताना है डायरेक्ट करंट ऑल्टरनेटिंग करंट से किस तरह डिफर करता है. आप क्या बताओगे? डायरेक्ट करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली. However, alternating current reverses direction many times in 1 second. What will you say? Direct current या DC current flows in one direction only. However, alternating current changes direction many times या reverses direction. Alternating current changes direction या reverses डायरेक्शन मैनी टाइम्स इन 1 सेकेंड. बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन बहुत दफ़ा रिवर्स होती रहती है इन 1 सेकेंड. हाउएवर डायरेक्ट करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली. आगे बढ़ते हैं. फिगर 6.1 represents the motor circuit. Point P is a point in the circuit between the motor and the positive terminal of the power supply. Okay. Point P is shown to the left of the motor in the circuit diagram. During a time of 120 seconds, the current in the circuit at point P is 41 ampere. भाई यहाँ पे आपका करंट क्या है? 41 एम्पियर. टाइम कितना है? 120 सेकेंड्स. यू हैव टू कैलकुलेट द चार्ज. हाउ विल यू कैलकुलेट द चार्ज बेटा? चार्ज इज ऑलवेज इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम. करंट क्या है? 41. टाइम क्या है? 120. कैन यू कैलकुलेट द चार्ज बेटा? कैन यू कैलकुलेट द चार्ज? द चार्ज कम्स आउट टू बी 4.9 10 raised to the power of 3 coulomb. Simple. आगे बढ़ते हैं. The current in the circuit is due to the flow of electrons. Each electron carries a charge of this magnitude. State the direction in which the electrons move past point P and determine the number of electrons that pass point P in 1 second. बेटा हमने बताना है या स्टेट करना है द डायरेक्शन विच द इलेक्ट्रॉन्स मूव पास पी. भाई किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं पास पी. कैन यू रियलाइज द इलेक्ट्रॉन्स always move from the negative terminal to the positive terminal. ये बात याद है. Electrons always move from the negative to the positive terminal. What will you say? P से किस तरह मूव करेंगे? How do they move past P? You will say they move towards the positive terminal. Electrons move towards the positive टर्मिनल. पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं. सिंपल. आपने बता दिया ये. इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द पावर सप्लाई भी लिख दो भाई. पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द पावर सप्लाई. बेटा अब आपका टोटल चार्ज कितना था? व्हाट वाज योर टोटल चार्ज दैट वाज being attained? Total charge कितना था? The total charge was 4.9 10 raised to the power of 3 here. The total charge is 4.9 10 raised to the power of 3 coulombs. The charge on one electron is 1.6 10 raised to the power of minus 19 coulombs. Can you calculate the number of electrons? Number of electrons निकाल सकते हो जी बिल्कुल. 4.9 10 raised to the power of 3 divided by 1.6 10 raised to the power of minus 19. Can you calculate the number of electrons? हाँ जी. Number of electrons निकाल सकते हो. Yes or no? Yes, the number of electrons comes out to be what?
3.06 into 10 raised to the power of 22. बेटा if you realize these are your number of electrons in 120 seconds, ये आपके number of electrons हैं 120 seconds में, so you can say there are 3.06 10 raised to the power of 22 number of electrons in how many seconds? 120 seconds. 1 second में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? x, can you calculate this value of x? 3.06 10 raised to the power of 22 divided by 120. The number of electrons in 1 second क्या हो जाएगा भाई? 2.6 10 raised to the power of 20 number of electrons. Simple. देखो बेटा हमने बहुत सिंपल सा काम किया. First of all, we calculated the total charge that is flowing in 120 seconds. 120 seconds में total charge कितना flow कर रहा था ये? This was the charge on one electron. Divide कर दो. You get the number of electrons in 120 seconds. अगर 120 seconds में इतने electrons flow कर रहे हैं, 1 second में कितने electrons flow करेंगे? 2.6 10 raised to the power of 20. Simple. The power supply of the electric car is a number of batteries each made from a large number of identical cells. अच्छा जी आपकी batteries बनी हुई हैं from identical cells. Okay. Each cell has an electromotive force of 3.7 volts. अच्छा जी आपकी electromotive force क्या है? 3.7 volts. Perfect. So you have to define the term electromotive force. What will you say? बेटा electromotive force की क्या definition होगी? Work done per unit charge. Work done per unit charge in moving a unit charge across the complete circuit. बेटा EMF की क्या डेफिनेशन होगी? वर्क डन पर यूनिट चार्ज in moving a unit charge across the complete circuit. Simple. अच्छा. Each battery consists of 92 cells in series. Calculate the EMF of one battery. बेटा आपने EMF of one battery निकालनी, कैसे निकालोगे? Always remember in series the EMF of each cell gets added up. एक सेल का EMF क्या है भाई? 3.7. 92 cells का EMF क्या हो जाएगा? 92 into 3.7. Can you calculate this answer? 92 into 3.7 EMF क्या आ गया भाई? 340 volts. The power supply is made by connecting 85 of these batteries in parallel. Calculate the EMF of the power supply. Parallel में power supply का EMF remains same. 340 volts is your answer here as well. देखो बेटा हमने क्या किया, वापस सुन लो. वापस सुन लो हमने क्या किया. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन था कि वन बैटरी में 92 सेल्स लगे हुए इन सीरीज. एक सेल का ईएमएफ क्या है? 3.7. तो 92 सेल्स का ईएमएफ क्या हो जाएगा? 92 इंटू 3.7 दैट इज 340 वोल्ट्स. ओके. नाउ आपके पास 85 बैटरीज हैं जो कि आइडेंटिकल है. लाइक यू हैव 85 बैटरीज ईच ऑफ 340 वोल्ट्स कनेक्टेड इन पैरेलल. तो मुझे बताओ टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा? पैरेलल में तो वोल्टेज सेम रहता है. और ईएमएफ विल बी 340. सिंपल. एन इलेक्ट्रिक केटल हैज़ एन आउटर केसिंग ऑफ मेटल. ठीक है भाई, ये इलेक्ट्रिक केटल की आउटर केसिंग जो है मेटल की बनी हुई है. फिगर 7.1 शोज द केटल. ओके, दिस इज अ केटल. परफेक्ट. The heater in the kettle is connected to a 340 mains power supply and has a power rating of this. This is your power, this is your voltage. You have to calculate the current in the heater. How will you do that? Power is equals to IV. Power क्या बेटा? 2300. Current हमें नहीं पता. Voltage is 230. Can you calculate the current? Current is equals to 230 divided by this. Current comes out to be 10 ampere. Simple. इससे आसान और क्या सवाल देगा examiner? I don't think there is an easier question than this. The manufacturer of the kettle states that the cable for the kettle is safe for currents that are smaller than 15 ampere. Okay. By cable safe hai if the current is smaller than 15 ampere. Okay. The wiring in the main supply in the wall is safe for currents that are smaller than 20 ampere. Okay. Wiring safe hai for current smaller than 20 ampere, and the cable is safe if the current is smaller than 15 ampere. Okay. The fuses available for the kettles have the rating shown. Okay. State which of these fuses is the most appropriate. Explain why it is the most appropriate.
बेटा आपका केटल में फ्लो होने वाला करंट क्या आ रहा था? 10 एम्पियर। Always, always remember that your fuse key rating is slightly above the current in the appliance. बेटा हमेशा याद रखो आपकी जो फ्यूज की रेटिंग होती है दैट इज स्लाइटली अबव देन द करंट इन द अप्लायंस। तो आप यहाँ पे क्या कहोगे? यू विल से सी बेटा ये जो 15 एम्पियर और 20 एम्पियर का करंट है ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया। फ्यूज की रेटिंग देखते वक्त यू ओनली सी द करंट इन द अप्लायंस। अप्लायंस में केटल में कितना करंट फ्लो कर रहा है? 10 एम्पियर का। यू वांट अ फ्यूज दैट इज स्लाइटली अबव द current in the appliance. So you will say that the fuse rating is larger, yeah, slightly larger than the current in the kettle. The fuse rating is slightly larger than the operating current in the appliance. Simple. Nothing complicated here. आगे बढ़ते हैं बेटा, लेट्स फर्दर मूव अहेड। अच्छा यहाँ पे आ जाओ। There are three wires in the cable that connect the kettle to the main supply. Earth wire है, live wire है, neutral wire है. The wires are all correctly connected. अच्छा जी सारे के सारे wires correctly connected हैं. State the name of the wire that the fuse is connected into. हमेशा याद रखो fuse is connected into the live wire. Okay. Explain why the fuse is connected into this wire. बेटा fuse को हम live wire में क्यों connect करते हैं? Yes. Why is the fuse connected in the live wire? Because देखो हम फ्यूज को लाइव वायर में क्यों कनेक्ट करते हैं बेटा? लेट सपोज दिस इज योर अप्लायंस। इफ द करंट गेट्स लार्जर, करंट गेट्स एक्सट्रीमली लार्ज, बेटा अगर करंट एक्सट्रीमली लार्ज हो जाएगा तो फ्यूज ब्लो ऑफ कर जाएगा विदाउट रीचिंग द अप्लायंस। We place the fuse in the live wire so that if the current gets very large, the circuit disconnects या the wire disconnects without harming the kettle। देखो बेटा अगर आपका करंट बहुत लार्ज हो जाएगा क्या होगा? फ्यूज ब्लो ऑफ हो गया, आपका करंट अप्लायंस को पहुंचेगा ही नहीं। दिस विल नॉट हार्म द अप्लायंस। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, यू कैन से इफ द करंट गेट्स टू लार्ज द सर्किट ब्रेक्स, या ये कह सकते हो कि द सर्किट डिस्कनेक्ट्स, द सर्किट ब्रेक्स या फिर डिसकनेक्ट्स। क्या होगा? सर्किट ब्रेक करेगा, डिस्कनेक्ट करेगा, व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? दिस prevents the appliance from getting damaged। बेटा अगर आपका फ्यूज जो है वो लाइव वायर में लगा होगा, द करंट अगर लार्ज होता है द सर्किट विल इमीडिएटली डिस्कनेक्ट या ब्रेक। दिस प्रिवेंट्स द अप्लायंस फ्रॉम गेटिंग डैमेज। सिंपल, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है। अप्लायंस कह सकते हो, केटल कह सकते हो, यहाँ पे वॉट एवर यू वांट टू से। द इंसुलेशन ऑन द लाइव वायर इज डैमेज so that the live wire is exposed. What happens when the exposed wire touches the metal outer casing? बेटा क्या होगा अगर आपकी लाइव वायर मेटल आउटर केसिंग को टच करेगी? Yes, geniuses, what will happen? Hmm. As the live wire touches the casing, touches the metal casing, क्या होगा? The casing becomes live।
और केसिंग लाइव हो जाएगी तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? द केसिंग बिकम्स लाइव हो जाएगी तो क्या होगा? दिस causes the earth wire to draw out a large current and the fuse melts. बेटा यही अर्थ वायर का फायदा होता है. इफ द लाइव वायर गेट्स अटैच्ड विद द मेटल केसिंग गेट्स लाइव. दिस causes the earth wire to draw out a large current and the fuse melts, breaking the circuit. Yeah, disconnecting the circuit if you want to write it here. Disconnecting the circuit. Simple. आगे बढ़ते हैं बेटा. The kettle is switched on for a time of 34 hours during 1 year. The cost of electricity is $0.32 per kilowatt hour. Calculate the cost of using the kettle during the year. बेटा अब आपको ये बात याद होनी चाहिए कि किलोवाट आवर इज अ यूनिट ऑफ व्हाट? दिस इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी. अच्छा सर, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम. बेटा जब भी आपने एनर्जी को किलोवाट आवर में निकालना है, योर पावर शुड बी इन किलोवाट, टाइम शुड बी इन आवर्स. व्हाट इज योर पावर ऑफ द केटल? केटल की पावर क्या है भाई? केटल की पावर इज 2300. ओके, इसको किलो में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 2300 वॉट्स को किलो में कैसे कन्वर्ट करेंगे? डिवाइडेड बाई 1000, 2.3 किलो वॉट्स. 2.3 किलो वॉट्स आ गया. हमेशा याद रखो, वेन एवर यू हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी इन किलो वॉट आवर, पावर किस में आ जाएगी? किलो वॉट में. टाइम क्या है? 34 आवर्स. कैन यू कैलकुलेट द एनर्जी बेटा? 2.3 इंटू 34. क्या आंसर आ गया? 78.2 किलो वॉट आवर. हमेशा एक की पॉइंट याद रखो बेटा, वेन एवर यू हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी इन टर्म्स ऑफ किलो वॉट आवर, पावर आपकी किलो वॉट में होगी, टाइम आपका आवर्स में होगा. सिंपल. नाउ जब आपकी एनर्जी आ गई इन किलो वॉट आवर्स, व्हाट विल यू डू? कैन यू रियलाइज 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी डॉलर्स? 0.32. तो बेटा 78.2 किलो वॉट आवर कितने डॉलर्स के इक्वल होगा? एक्स. कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स? 78.2. 0.32. कैन यू कैलकुलेट द कॉस्ट? कॉस्ट निकाल सकते हो भाई. द आंसर कम्स आउट टू बी $25.02. सिंपल. यहाँ पे लिख दो. $25.02 इज योर आंसर. सिंपल, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड. आगे बढ़ते हैं बेटा. लेट्स सी दिस. ठीक है. The element lithium has several different isotopes. State one way in which the composition of the atoms of all lithium isotopes are same. They have the same proton numbers. बेटा हमेशा याद रखो, isotopes में you have the same proton numbers. Perfect. State one way in which the composition of a lithium atom of one isotope is different from the composition of a lithium atom of a different isotope. Isotope में क्या चीज़ different होती है? Different number of neutrons. लिख लो. Different number of neutrons. Simple. आगे बढ़ते हैं. Figure 8.1 is a diagram that represents a neutral atom of a radioactive isotope lithium. ठीक है बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3. So you have 3 electrons. Always remember, if your atom is neutral, इसका मतलब क्या है? Number of protons is equal to number of electrons. अगर इलेक्ट्रॉन्स आपके 3 हैं तो प्रोटॉन्स भी कितने होंगे? 3. ओके. देर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट. ये एग्जामिनर बड़ा इजी आया हुआ है इस पेपर में. द न्यूक्लियर सिंबल्स फॉर द आइसोटोप्स ऑफ लिथियम आर शोन एज एक्स वाई, वेयर एक्स एंड वाई आर नंबर्स. डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फॉर द आइसोटोप रिप्रेजेंटेड बाय फिगर 8.1. ठीक है
बेटा ये y क्या होता है? प्रोटॉन नंबर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स 3 है, प्रोटॉन्स भी कितने हो जाएंगे? 3, बिकॉज इट्स अ न्यूट्रल एटम। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आई? व्हाट विल द बी? सॉरी, ये मैंने क्या कर दिया? वन सेकेंड। ओके, इफ यू रियलाइज y क्या है? प्रोटॉन नंबर। प्रोटॉन्स कितने बेटा आपके पास? 3। सर हाउ डू यू नो दैट? बिकॉज इट्स अ न्यूट्रल एटम, अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी 3 होंगे। y की वैल्यू 3 आ गई। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? x is the number of neutrons plus protons, that is all the particles in the nucleus, 1 2 3 4 5। x की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। An ion of this isotope of lithium has a single positive charge। अच्छा जी, आपके पास +1 का चार्ज है, represented like this। Describe how the diagram that represents this ion differs from figure 8.1। भाई आपकी जो आयन की डायग्राम होगी वो फिगर 8.1 से कैसे डिफर करेगी? यस, हाउ विल योर आयन की डायग्राम डिफर फ्रॉम फिगर 8.1? यू विल से देयर इज वन फ्यूअर इलेक्ट्रॉन, या आप कह दोगे वन फ्यूअर ब्लैक डॉट। विल से वन फ्यूअर इलेक्ट्रॉन, या वन फ्यूअर क्या हो जाएगा? वन फ्यूअर इलेक्ट्रॉन या वन फ्यूअर स्मॉलर ब्लैक डॉट। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव अहेड। अच्छा, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स emit न्यूक्लियर रेडिएशन दैट कैन अफेक्ट लिविंग थिंग्स। स्टेट वन, डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन। न्यूक्लियर रेडिएशन का क्या डैमेजिंग इफेक्ट हो सकता है भाई? कैंसर। Okay, the emission of radioactive radiation from an unstable isotope is described as random and spontaneous। State what is meant by random and what is meant by spontaneous। Random का मतलब क्या होता है? The number of radiations emitted per unit time is unpredictable। Number of radiations emitted in a unit time is unpredictable। तो spontaneous का मतलब क्या होता है? Number of radiations emitted is not affected by external environment, is not affected by external environment। Simple। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कह लो, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशंस कह लो, वट एवर यू वांट टू से हियर। ठीक है, आगे बढ़े। चलो लेट्स मूव अहेड। अब क्या लिखा हुआ है? फिगर 9.1 shows how the sun and the rest of the solar system orbit the center of the Milky Way in a circular path। ठीक है, ये मिल्की वे गैलेक्सी। ओके, द सन ट्रैवल्स अराउंड द सर्कुलर पाथ एट अ स्पीड ऑफ वी। अच्छा, ये पोजिशन ऑफ सोलर सिस्टम है। ओके, एट अ स्पीड ऑफ वी। द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम इज दिस। ये स्पीड ऑफ लाइट आ गई। ओके, द सन इज 26,000 light years from the center of the Milky Way galaxy। Calculate the distance of the sun to the center of the Milky Way galaxy in kilometers। अच्छा जी, डिस्टेंस निकालना है, कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस इज इक्वल टू 26,000 लाइट ईयर्स। और बेटा एक लाइट ईयर किसके इक्वल है? 9.5 10 raised to the power of 12 kilometers। If one light year, yeah, the distance traveled by light in 1 year is equal to 9.5 10 raised to the power of 12 kilometer। बेटा 26,000 लाइट ईयर्स कितने किलोमीटर्स के इक्वल होंगे? x comes out to be what? 26,000 9.5 10 raised to the power of 12। What does your answer for the distance comes out to be in kilometers? भाई क्या आ रहा है डिस्टेंस का आंसर इन किलोमीटर्स? बता सकते हो? What does your answer for distance comes out to be? Any genius in the chat कोई बताना चाहेगा? Yes, the answer comes out to be 2.5 10 raised to the power of 17 kilometers। Simple।
The sun takes these amount of air to complete one orbit around the Milky Way galaxy. Calculate orbital speed. Orbital speed का क्या formula होता है? 2 pi r divided by capital T. 2 pi. What is your r? 2.5. 10 is the power of 17. और बेटा आपने एक एक्स्ट्रा 10 is the power of 3 लगा देना है. Why have I placed this extra 10 is the power of 3? Because किलोमीटर लिखा हुआ है. टाइम क्या है? 2.3. 10 is the power of 8. Can you calculate the orbital speed बेटा? Orbital speed निकाल सकते हो? The orbital speed comes out to be 2.2 10 is the power of 5 meters per second. Simple. आगे बढ़ते हैं. Astronomical observations suggest that all of the Milky Way, that at the center of the Milky Way there is a black hole. अच्छा जी, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन हमें सजेस्ट कर रही है कि सेंटर ऑफ द मिल्की वे पे एक ब्लैक होल है. Black holes are produced from red supergiants. Okay. Near the end of its life, a massive star becomes a red supergiant. Describe what happens inside the star as it becomes a red supergiant. भाई red supergiant आप बनते हो तो क्या होता है? बेटा red supergiant आप कब बनते हो? When most of the hydrogen has been converted into helium. आपका outer region expand करता है और inner core contract करती है. तो you will say most of the hydrogen gets converted into helium. The outer the outer surface कह सकते हो, outer region कह सकते हो. You will say the outer region या surface expands. Region expands and the inner core contracts. Simple. Describe how a red supergiant produces a black hole. क्या होता है? The red supergiant explodes as a supernova, producing a nebula and leaving behind a black hole. या आप कह दो. The red supergiant explodes as a supernova. The red supergiant explodes as a supernova, producing a nebula and leaving behind a black hole. Describe how the heaviest elements are produced. Heaviest elements किस तरह produce होते हैं? In the supernova explosion, lighter nuclei combine together या fuse together to form heavier nuclei. लिख लो. In the supernova explosion, lighter nuclei combine या फिर fuse together to form heavier nuclei. Simple as that, nothing complicated. I hope this chapter was clear to, sorry, this paper was clear to all of you. If you have any questions, you can ask in the chat.